exam from Monday onwards, and the registrations are going on for the third year students and the droppers, and this is a guaranteed batch. We assure you quality, we assure you best results, hard work, dedication, and the best teachers we will provide you to clear the exams so that you should excel in MC Entrance 2024. So any doubts, any queries, you can call us at 98721-24534. NIMCET 2024 this year has increased its seats. So अगेन NIT जमशेदपुर बच्चों एग्जाम ले रहा है, जिसमें कि हमारे पास एक्स्ट्रा सीट्स आ गई हैं NIT पटना की और IIIT भोपाल की. So that's a very big news. And again पंजाब यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म निकल आया है. Informatics is starting new batches for NIMCET and Punjab University MC Entrance exam from Monday onwards, and the registrations are going on for the third year students and the droppers, and this is a guaranteed batch. We assure you quality, we assure you best results, hard work, dedication, and the best teachers we will provide you to clear the exams so that you should excel in MC Entrance 2024. So any doubts, any queries, you can call us at 98721-24534. NIMCET 2024 this year has increased its seats. So अगेन NIT जमशेदपुर बच्चों एग्जाम ले रहा है, जिसमें कि हमारे पास एक्स्ट्रा सीट्स आ गई हैं NIT पटना की और IIIT भोपाल की. So that's a very big news. And again पंजाब यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म निकल आया है. Informatics is starting new. Hello guys. So welcome once again to Informatics YouTube channel, Informatics India. So today we'll be having a lecture on tenses, which is very important, and definitely I assure you, अगर आप पिछले NITs के पेपर्स देखोगे या फिर आप पंजाब यूनिवर्सिटी के क्यूएट के एग्जाम देखोगे, इस टॉपिक में से क्वेश्चंस आए हुए हैं. एंड डेफिनेटली आज जो हम करेंगे, आई वोंट बी गिविंग यू अ डिटेल्ड पार्ट ऑफ अ टेंसेस, राइट. जस्ट मैं आपको वो पार्ट पढ़ाऊंगी जिसमें कि क्वेश्चंस आते हैं. सो अगर आपके पास टेंसेस क्लियर हैं, दैट इज वेल एंड गुड. अदरवाइज एक बार आप खुद टेंसेस को देख सकते हो. सो दीज आर कॉल्ड एज कंडीशनल सेंटेंसेस, जो कि आपको एग्जाम में आते हैं. तो एग्जामिनर कभी भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पुट अप करता है कि हाँ जस्ट टेल मी अ फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट टेंस और द पास्ट टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. एग्जामिनर आपको इवैल्यूएट करेगा कंडीशनल्स के ऊपर, राइट. सो कंडीशनल सेंटेंसेस का जो lecture है, it's very important for all these parents who are giving NITs, who are giving CUET, who are giving Maharashtra CT or Punjab University Chandigarh exam for 2024 MCA. And I assure you paper में आएगा, right. And next coming time will be next chapter. What we'll be doing will be our vocabulary, that is antonyms and synonyms. Again, it's a very important chapter जहाँ पर कि आप मार खाते हो, and हम हमेशा इंग्लिश भी शॉर्टकट से कराते हैं. सो एट इन्फॉर्मैटिक्स वी गिव यू ऑल द शॉर्टकट्स फॉर दीज चैप्टर्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द कंडीशनल सेंटेंसेस. सो फर्स्टली व्हाट आर द कंडीशनल सेंटेंसेस? कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं? सो कंडीशनल सेंटेंसेस मींस व्हेन देयर इज अ टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस takes place, when the two actions takes place one after the another, and these actions are interdependent upon one another, right. They are having a conjunction in between them, like if, provided, as soon as, no sooner, unless, until, when, as soon as. So conditional sentences को हम तब conditionals कहेंगे because जब दो sentences हैं and one action takes place after the other actions and the second action is dependent upon the first action. समझ में आई आपको बात? सो हमारा दो सेंटेंसेस, जैसे यू विल सक्सीड प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड, दिस इज अ कंडीशनल सेंटेंस बिकॉज बीच में कंडीशन आ गई, राइट. सो दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल. लेट्स गो थ्रू द रूल 1. सो आई विल बी गिविंग यू बेसिक रूल्स और 4 बेसिक रूल्स फॉर कंडीशनल्स. दैट्स ऑल. 4 रूल्स, 4 को अच्छी तरह कीजिए. गुड, दैट्स गुड. सो first rule comes here of the conditional. So conditional sentence have 2 parts. हमेशा याद करो, एक कोई भी सेंटेंस हमारे पास होता है बच्चों, उसके 2 parts होते हैं. एक होता है मेन क्लॉज, जिसमें हमारा मेन सब्जेक्ट होता है,
और दूसरा होता है इफ क्लॉज, जो कंडीशनल होता है. सो मेन क्लॉज, इफ क्लॉज इज डिपेंडेंट अपॉन द मेन क्लॉज फॉर इट्स मीनिंग, राइट. इफ क्लॉज इज डिपेंडेंट अपॉन द मेन क्लॉज. सो जब हमारे पास दो सेंटेंस हैं, जैसे अभी हमने किया, वर्क हार्ड अनलेस यू विल फेल. सो इफ क्लॉज जो है इट इज डिपेंडेंट अपॉन द मेन क्लॉज टू गिव इट्स मीनिंग. बीच में इफ क्लॉज लगा है, राइट. सो दो सेंटेंसेस हैं. हम आज जो करेंगे, वी आर हैविंग थ्री टाइप्स ऑफ इफ क्लॉजेस, राइट. केस वन, इफ क्लॉज इन द प्रेजेंट टेंस, if clause in the past tense, if clause in the past perfect tense, and other type of conditionals like इसमें आ जाएंगे other conditionals में imaginary sentences, right. इसमें imaginary sentences and other conditionals आ जाएंगे आपके पास. So और unless until sentences, unless until when these two conjunctions are used as a if clause, right. So हमारे पास तीन बेसिक रूल्स ये रहे. if clause in the present tense, so most probably अब तक आपको पता चल गया होगा कि if clause होता क्या है. if clause का मतलब है कि हमारा जो सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस है, एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स. एक होता है मेन क्लॉज और एक होता है इफ क्लॉज. इफ क्लॉज इज डिपेंडेंट अपॉन द मेन क्लॉज फॉर इट्स मीनिंग, right. So let's start with the first clause, if clause, when it is present in the present tense. So write the general formula of the if clause. So write down the general formula of the if clause. When if clause is present in the present tense, then simple present, it always follows simple future. Very simple. Rule 1, जब हमारा if clause, if is followed by simple present tense is followed by simple future. Say for example, अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है, if I will come to Delhi, I will meet you. This is again I will come, this is simple future followed by simple future. I will plus V1 plus object. Similarly, this is simple future. So simple future followed by simple future, not acceptable, wrong. So the final answer comes to be, if I come to Delhi, that is simple present followed by simple future. So always a simple present tense, it follows a simple future tense. Rule 1. So make it sure simple present tense is always followed by a simple future tense. Correct? I think it must be very very clear, क्योंकि इस तरह से आपको एक सेंटेंस आता है एग्जाम में, इसको आपको रेक्टिफाई करना है, राइट. So simple future always followed, simple present always follows simple future. Rule 1. Now next to the next slide. When two actions take place one after another in future, so first action is in simple present, the second action is simple future. Say और examples लेते हैं हम इसके कुछ. Take some more examples of the same. She will come to meet you as soon as you will reach Delhi. गलत, बीच में as soon as लग गया. If clause. So she will come to meet you as soon as you reach Delhi. Simple present. So this is wrong. एक और sentence लीजिए. If the government will become strict, corruption will surely finish. So यहाँ भी will, यहाँ भी will. Simple future दो आ गया हमारे पास. गलत. If the government becomes, so make it simple present. Simple present means subject, V1, S or ES plus object. This is the formula for simple present. Or so if the government becomes strict, corruption will surely finish. This is the correct answer. Third एक और लीजिए. I will help him provided he will mend his ways. Again एक will, दोनों में simple future.
गलत. Again, I will help him provided he mends his ways. So this is how the rule 1 it follows. Simple future, simple present followed by simple future, right? So this first action, if it is in simple present, the second action must be in the simple future. I think so now the rule must be very, very clear to all of you. That is rule 1. That is right. Next, moving to the next rule, next slide. Say. मैं आपको सारे वही रूल्स करा दूं जो पेपर्स में आते हैं, इसलिए अगर आपने ये वाले रूल्स किए, इसमें से काफी रूल्स आपको सेम आ सकते हैं. अनलेस ही विल नॉट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, ही विल नॉट रिकवर. अगेन ये देखो, ये भी विल एंड ये भी विल, दो सिंपल फ्यूचर, गलत. अनलेस ही टेक्स केयर ऑफ हेल्थ, ही विल नॉट रिकवर. सो कोई भी अगर आपके पास इफ क्लॉज आता है, इफ इट इज डन विद इफ, provided, as soon as, before, as soon as, कुछ भी हो जाए, unless, until, same is the case, simple present followed by simple future. But एक और बात याद रखिए, not is never used with unless and until. अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल दिया था, work hard unless you will fail. राइट. सो अगर मैं इसको ऐसे करूं, ऐसे लिखा हो, वर्क हार्ड, राइट, अनलेस यू विल नॉट पास, अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल. इस तरह से ले लीजिए. से अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड. सो मेरा कहने का मतलब, अनलेस जहां लग गया वहां पर नॉट नहीं आएगा. Wait here until I do not come. गलत. Until के साथ not नहीं आएगा. Wait here until I come. So unless and until two if clauses are there, which never takes not with them. Unless के साथ भी not नहीं लगता, until के साथ भी not नहीं लगता. Right? So conditional sentence. Again. Next. Now, rule 2. हमने rule 1 किया. If clause in the present tense. Now, if clause is in the past tense. And if clause when it is there in the past tense, then what is the rule? If plus simple past followed by subject, would and V1. इसको आपको learn करना पड़ेगा. It is a different rule. दो tenses नहीं join कर रहे हैं, but दो auxiliaries join कर रही हैं. So when if clause is followed by simple past, then it is followed by subject, would and V1. Say for example, if clause, right, example, so next is general formula. Again, take a next general formula. वो वाला फॉर्मूला आपने लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा. इफ क्लॉज इन द पास्ट टेंस. नेक्स्ट इज इफ क्लॉज इन द इज फॉलोड बाय पास्ट परफेक्ट टेंस. वही पास्ट टेंस का फॉर्मूला है बच्चे. अगर इफ क्लॉज इज फॉलोड बाय पास्ट परफेक्ट, देन सब्जेक्ट वुड हैव एंड V3. सब्जेक्ट देन वुड प्लस हैव प्लस V3. सो यू कैन मार्क इट. आप इसको नोट कर सकते हो इस फॉर्मूला को. So note down the formula. If clause is followed by past perfect, then it is followed by subject plus would plus have plus V3. Verb का third form, right? Say for example, if I had seen you means I had not seen you. So in such sentences we can also replace if by had also. This will not change the sentence, right? Or had plus subject plus V3. Had I seen you, I would have stopped my car. Right? That means यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा जब हम उसको had को या have को इधर लेके आएंगे. Had plus subject plus V3 plus object plus subject plus would plus have plus V3. This is what is the final
comes out to be, had I seen you, I would have stopped my car. So if the conditionals they start with had, अगर if को हम had से replace कर देते हैं, had I seen you, I would have stopped my car. Perfect, right? So finally हमारे पास ये 3 rules जो मैंने अभी आपको कराए, जो final आ जाते हैं, which you have to remember. If clause when followed by simple present, it takes simple future. Rule 1. If clause when followed by simple past, subject plus V3, it is followed by subject plus would plus V1. If clause when perfect tense, past perfect, subject plus would plus have plus V3. तो 3 रूल्स ये मैंने आपको कराए. पहला रूल अगेन रिवाइज करो इसको. इफ टेंस, इफ क्लॉज व्हेन फॉलोड बाय सिंपल प्रेजेंट, इट इज फॉलोड बाय सिंपल फ्यूचर. रूल 1. इफ क्लॉज फॉलोड बाय सिंपल पास्ट, इट इज फॉलोड बाय सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1. एंड इफ क्लॉज व्हेन फॉलोड बाय परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3. और इस इफ को हम हैड से भी कन्वर्ट या चेंज कर सकते हैं, जो अभी हमने देखा, राइट? सो ये 3 हमने रूल्स किए. जस्ट हैव अ लुक अगेन, वंस अगेन इसको रिवाइज करते हैं. यहां से हमने शुरू किया था बच्चों. इफ क्लॉज, जल्दी से फास्टली गो थ्रू दिस. इफ क्लॉज फॉलोड बाय सिंपल प्रेजेंट, फॉलोड बाय सिंपल पास्ट. डन, याद हो गया. नेक्स्ट कीजिए. ये मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे. अनलेस एंड अनटिल के साथ नॉट नहीं लगता. नेवर यूज नॉट विद अनलेस एंड अनटिल. रूल 2 कम्स ओवर हियर. इफ क्लॉज पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट, फॉलोड बाय सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1. इफ आई हैड मनी, simple past, I would lend it to you. I would lend it to you. Simple past, I had money. Subject V2 object, I would lend it to you. Right? So simple past followed by subject, would and V1. Done? Learn हो गया? Then, if clause followed by past perfect, rule 3. Then it is followed by subject plus would plus have plus V3. So 3 रूल्स ये. और if can be replaced by had also. अगर हम if को had से रिप्लेस करना चाहें, से फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैड सीन यू, आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार. इफ कैन बी रिप्लेस्ड बाय हैड आई सीन यू, आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार. सो बेसिकली ये 3 कंडीशनल सेंटेंसेस हैं जो आपको आने के बहुत चांसेस हैं. तो दिस इज द फाइनल 3 सेंटेंसेस. मिसलेनियस में मैंने आपको बोला था दैट इज अ इमेजिनरी सेंटेंसेस. इमेजिनरी सेंटेंसेस आर दोज वेयर वी अज्यूम अ इमेजिनरी पोजीशन, राइट? से वो पोजीशन जो कि दैट इज नॉट डूइंग. से इफ I were a bird. Always imaginary sentences take a plural verb with them. That is were. Irrespective of the fact that the subject is singular or plural. Say, I say, if I wish I were a bird. That is, I wish. So these type of imaginary sentences, they start with wish or pretended. So it is those sentences which we are not, but they are imaginary. Say, for example, he pretended as if he was sleeping. No. This is pretended. That means it is an imaginary sentence. He pretended as if he were sleeping, not was. So I just told you in the imaginary sentences, irrespective of the fact that the subject is singular, we always used verb in the plural sense. That is verb. That is the rule over here. If plus subject plus verb, subject plus would plus V1. So you can note it down again once again. आप इसको नोट कर सकते हैं. ये 4th रूल मैंने आपको कराया. if के साथ subject और were है, subject would और V1. Say if I were a bird, I would fly in the sky. If I were rich, I would have shared my money.
right? I would have shared my money. So these are called as imaginary sentences. And obviously आपको पता है कि NIT में 2022 में भी आए थे imaginary sentences, 21 में भी आए थे. So imaginary sentences are very commonly asked. Say, take one more example. He scolds me as if he was my father. Right? Again in imaginary, he scolds me as if he was me, he were my father. Right? He is not, but pretended to be. So these type of sentences are called imaginary. So say, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक और सेंटेंस बताया था. He pretended as if he was my friend. No, he pretended as if he were my friend. But he's not. Right? जब pretended है, that means it is not. Unless and until, again a very important rule. Next last rule जो आपको मैं कराऊंगी ये वाला. Unless plus affirmative sentence. Always if plus negative. मैंने आपको बोला unless or until. Unless and until. Both means not. इसके अंदर not, because these are already a negative words. So with a negative word we cannot use not. No. Unless you work hard you will not pass. If you do not, हाँ अगर ये है, अगर हम इस unless को if के साथ replace कर दें then we can use not with it. But unless के साथ हम not नहीं use कर सकते. Unless you work hard you will not pass. It is correct. But अगर हम इसको बोले unless you do not work hard then it will be wrong. अगर आपको not लगाना है तो उसको if में convert करो. If you do not work hard you will not pass. Right? So with unless and until, never use not with it. It would be a great blunder. Right? So this was all about the miscellaneous sentences and the three conditionals which are very important, जो बच्चे के दिमाग में नहीं रहते regarding a if clause, subordinate and the mean clause. Right? So dear students, हम लोग रेगुलरली इवनिंग में 6 to 7 और 7 to 8 हम लोग इन्फॉर्मैट्स की पूरी टीम आपके पास लाइव आती है और कुछ ना कुछ ऐसा कराती है जो डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में आने के 100% चांस होते हैं. सो नेवर मिस आवर ऑनलाइन क्लासेस एज अ यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मैट्स इंडिया. और यही रिकॉर्डेड बैच में भी आपको जाता है यही. और इसके अलावा यू कैन डाउनलोड आवर ऐप दैट इज कोर्स यूट्यूब विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी फ्री टेस्ट सीरीज बनाई हुई है NITs की और CUET की, राइट, और NIMCET की, सबकी आपको टेस्ट सीरीज है जो आप करके एटलीस्ट आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आएंगे, राइट. एंड वेर नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इवन इन्फॉर्मैट्स हैव अनाउंस्ड इट्स रेगुलर बैचेस एज वेल एज क्रैश बैचेस विच आर ऑनलाइन एज वेल एज एन ऑफलाइन बोर्ड. सो अगर आपके पास कुछ क्वेरीज हैं, so all the numbers are given in the description box. Even we have mentioned the links for the Course Edu app, our Telegram channel, YouTube channel, as well as you can say all the links are there in the bio. So any queries, any doubts, you can call us anytime or you can WhatsApp us. So till then, have a good learning time. Do good, hard work करो और एक अच्छा result definitely अपने आप produce होगा. Right? So इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. When you are with Infomats, definitely you'll be getting the best shortcuts, and dear students, you are very safe because हम वही चीज़ आपके सामने लाएंगे जो पेपर में आती है. So most probably मेरा जो next lecture होगा वो आपको vocabulary भी मिलेगा, उसका बहुत फायदा होगा because vocabulary is that thing जो कि आप लोग दूर भागते हैं. Maximum छोड़ क्या है, but अगर आप English के lectures लगाओगे then never possible कि आप English छोड़ कर आओगे, because अब आपको पता है NIT में sectional cut off है, आपको सेक्शनल टाइम कट ऑफ है, आपके पास कंप्यूटर्स और इंग्लिश करने के लिए बच्चे सिर्फ 20 मिनट है. उसी 20 मिनट में आपने कंप्यूटर्स भी करना है और इंग्लिश भी करना है, राइट. सो अगेन हमें कहाँ टाइम सेव करना है, दैट इज द मेन थिंग, कि हमें शॉर्टकट्स आने चाहिए, फाइन, और हमें रूल्स पता नहीं तो हम लोग सोचते ही रह जाएंगे करना कैसे है. सो टिल देन, फॉर द नेक्स्ट लेक्चर tomorrow we'll be meeting again, so all the best, do well, thank you.